Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We start our lecture. I am offering you the course Professional Practices for IT. Okay, and the outcomes for this course are actually 5 outcomes of this course. Number 1, describe positive and negative ways in which computer technology alters modes of social interaction at the personal level. What does it mean? Nowadays we are actually interacting with the computer and with the social media and all this latest technology, and it definitely has the positive and negative effect. How it affects our personal life and our community life. So the first objective or the first outcome is actually to discuss this positive and negative effects. Okay, the second outcome of this course is evaluate ethical and social trade-off in technical decisions. So what does it mean? Whenever you are in professional life, situations are not like quite simple. As yesterday I told you that if we go for the lunch, we have multiple options. It is very simple activity, simple task that we do every day, but still we think about that activity. We sometimes we are confused what to choose from that menu. Okay, similarly when we are in professional life, we have to decide among multiple choices, multiple options, and so it is actually our topic, our content that will cover that how we are going to tackle such situations. Okay, third outcome is evaluate the professional code of ethics from the ACM and IEEE Computer Society and other organizations. So mainly we will focus on ACM and IEEE Code of Ethics. It is a quite comprehensive code of ethics, and we will discuss that as a IT professional, how to behave, how to act in the organization. Okay. Number 4 is identify contemporary examples of intangible digital intellectual property. And I hope that you all have the understanding, you have little bit knowledge about the intellectual property rights. Okay. And nowadays it is very complicated because we have the software, and software are like intangible kind of thing, and applications like Cream and Uber, and there are so many other applications. Okay, so that piece of code has worth millions or billions of dollars. Okay, so if someone has that piece of code, so he wants to do the lot of business, not only in that specific community but in a global market. So how to actually defend, how to actually protect the legal rights of that owner who actually come up with that idea. So that is also very important. So we will discuss in this course that what are the different possibilities of intellectual property rights, and what are the different legal platforms or the legal protections that are available to the originator of the idea, originator of the product. Okay. Number 5 outcome is actually to investigate the impact of technological solution to privacy problems. So we are quite online, all the time online. We are very connected with the gadgets. So when we are connected, our data is also online available, and sometimes it is not for the public use, but there are many people, some have kind of bad intentions, and some are like they take it as a hobby. They try to access the data of other people. So we have the privacy issues. Those privacy issues we will actually discuss. Okay, and we will discuss what is the impact of those privacy issues. Okay, so these outcomes are actually quite kind of generic. We just discuss the content in the context of IT profession. You are IT students. Okay, so you must be aware of the contemporary issues that are related to the technology, and when you are in the field, when you are in your career, in your profession, okay, how to deal with these kind of issues. Okay. Okay, I just share you the recommended resources. The book that we are going to follow in this course is Ethics for the Information Age. It's a 6th edition and written by the Michael Quinn, and it is
published by the Pearson Education. You may also, read the other books like Kiza book, Ethics and Social Issues Information Age, and this is also quite good book, Ethics Information Technology. Our first chapter will be from this chapter, from this book, Ethics Information Technology by Reynolds, and the rest of our content will be covered from this Quinn book. Okay? आपका क्या नाम है? तलहा. तलहा, what is plagiarism? किसी के भी आइडिया को या ओरिजिनल आइडिया को अगर स्टील करें या कॉपी करें या इवन यूज करें बिना प्रॉपर्ली गिवन दी मतलब उसको क्रेडिटली वगैरह यूज करें तो बेसिकली हम उसको plagiarism. What are the possibilities of plagiarism? Different type of plagiarisms. कौन बताएगा? बताएं. इवन रिजल्ट को भी कॉपी करना है उसको फॉल्सिफाई करना है. ओके, रिजल्ट को कॉपी करना एक बात है, ठीक है, और रिजल्ट को फॉल्सिफाई करना इज अनदर पॉसिबिलिटी. और बताएं. जी बताएं शाबाश, आप बताएं. किसी का काम अपना काम शो करके प्रेजेंट करना, लेकिन किसी और का काम होगा काम क्या भी मेरा काम है. ठीक है, कॉपी करने की और क्या पॉसिबिलिटीज हैं? जी किसी के साथ कोलैबोरेट करना और फिर उसको उसका क्रेडिट ना देना, बाकी का काम ठीक है. या फिर किसी को रेफरेंस और बताएं. इंडिविजुअल काम हो उसको ग्रुप में करना. ठीक, और क्या पॉसिबिलिटी है? जी अपने लेक्चर या मॉडरेटर के जितने भी व्यूज हैं उनको एज इट रिप्रेजेंट कर देना, या जो हमें एक टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट पढ़ा है, कंटेंट पढ़ा है, उसी को एज इट पोर्ट्रेट कर देना. कॉपिंग फ्रॉम सिंगल सोर्स एंड कॉपिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज है ना. तो ये इसमें दोनों में क्या फर्क है? कॉपिंग फ्रॉम सिंगल सोर्स एंड कॉपिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, बताएं. भाई एक ही वेबसाइट, जी बताएं. एग्जैक्टली एक ही विकिपीडिया से जाके पूरा आर्टिकल कॉपी किया, ठीक है, दैट इज सिंगल सोर्स. और अगर दो तीन आप ज्यादा स्मार्ट हैं, आपने दो तीन डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके और वहां से जो है ना एक एक पैराग्राफ कॉपी करके वो पेस्ट कर दिया, दैट इज मल्टीपल सोर्सेस. ठीक है. अच्छा, अब हम इस बात पे आते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस टू नॉट डू द कॉपीइंग एंड पेस्टिंग. पॉजिटिव रीजंस क्या है? जी एग्जैक्टली, यू शुड प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है ना. और इसके अलावा क्या है? बताएं. कोई आपके ख्याल में, अगर हम कॉपी नहीं कर रहे, हम चीट नहीं कर रहे, हम अपनी एफर्ट से काम कर रहे हैं. जी एग्जैक्टली, फीलिंग ऑफ अटेनमेंट है, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ठीक है. तो वी फील सेटिस्फाइड. जो मैंने कल आपको जैसे कहा था कि भाई अभी आपने एग्जाम में ले लिए मार्क्स चीटिंग करके, लेकिन जो बाद में अगर आपने इंडस्ट्री में जाके, ऑफिस में जाके, रियल लाइफ में जाके वहां पे परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा? मतलब उन ग्रेड्स की बेसिस के ऊपर तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन वहां पे आपके दोस्त तो नहीं होंगे, तो वहां पे तो आपको ज्यादा चांस नहीं मिलेगा. ठीक है. तो इसके अलावा भी ये बात है कि भाई मतलब दूसरों को क्रेडिट देना चाहिए. यू शुड गिव द क्रेडिट टू अदर्स, जो कि जिन्होंने एक्चुअल एफर्ट किया है, जिन्होंने एक्चुअल काम किया है. ठीक है ना. तो आपका दोस्त कुछ असाइनमेंट करता है तो उसने एफर्ट किया है ना, तो उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, रादर देन कि मैं उसको जो है ना चाहूँ कि भाई कॉपी कर लूं और मेरे उससे. मतलब इसको इस तरह से देखें कि किसी ने कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाई है, तो जो प्रोडक्ट के इन्वेंटर है तो उसको मतलब उसकी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, ड्यू अप्रिसिएशन, ड्यू क्रेडिट. ठीक है. अच्छा, ये क्या है? ये हमने डिस्कस कर लिया, कॉपिंग फ्रॉम सिंगल मल्टीपल. पैराफ्रेजिंग क्या है? ये रह गया पैराफ्रेजिंग. जी वर्ड्स को मिक्स अप करना, जो कॉपी किया आपने उसको वर्ड्स को मिक्स अप करना. और कोई बताएगा? जी बताएं. जो भी हमने कंटेंट पढ़ा उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके, आइडिया सेम वही होगा लेकिन वर्डिंग. ठीक है.
क्लूजन क्या है? नहीं कोई और बताए, इस साइड से बताएं भाई, आपने पढ़ा है इकरा? नहीं, बताएं क्लूजन क्या है, आप बताएं भाई नेक्स्ट। और क्लूजन इज जी हाँ, क्लूजन मीन्स द सीक्रेट एग्रीमेंट, ठीक है ना, काइंड ऑफ सीक्रेट एग्रीमेंट। आपकी एक असाइनमेंट है, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ इंडिविजुअल असाइनमेंट, और आप मिलके बैठे अच्छे दोस्त हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आपने असाइनमेंट तो अपनी करनी है, डिस्कशन आपने कर ली है, लेकिन वो डिस्कशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एवरीवन हैज द सेम कॉपी ऑफ द असाइनमेंट, ठीक है। डिस्कशन की, आपने अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद आपने उसको अपने तौर पे जो है लिखना है, अपने तौर पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। अच्छा, हाउ टू अवॉइड इट? जी बता, आपका नाम क्या है? तलहा। आपका नाम क्या है भाई? साकिब। बताएं। नहीं, हाउ टू अवॉइड इट? देखें, आप जब लिखते हैं, कोई आप असाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपको टॉपिक दिया गया है, यू हैव टू राइट डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स, ठीक है। तो लूप्स को आप क्या करेंगे, मतलब एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा ये कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग की बुक्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर जो है मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना लूप्स डिस्क्राइब किए गए हैं, उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि कंसल्ट करना पड़ता है उन रिसोर्सेज को, ठीक है। तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि इफ यू आर कॉपीइंग फ्रॉम दैट सोर्स इट इज प्लेजरिज्म, सो हाउ टू अवॉइड इट? आप उसके बगैर, उसको कंसल्ट किए बगैर लिख भी नहीं सकते हैं। हाँ ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू मेक द रेफरेंस, और जी हाँ, साइटेशन क्या होता है बताएं। सर साइटेशन एग्जैक्टली जो वर्ड्स हम लोगों ने सेंटेंसेस उस कंटेंट से लिए एज अ रेफरेंस उसको कोट करना। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है ना इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया हाउ टू अवॉइड इट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो उसके अंदर जो एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग को हमने क्या है कि इट्स काइंड ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ प्लेजरिज्म, ठीक है ना, और यही टेक्निक है टू अवॉइड द प्लेजरिज्म। कैसे? बताएं। नहीं जी, जैसे हम लोगों ने कहा था कि प्लेजरिज्म तब हो जाती है जब हम एग्जैक्टली वही आइडियाज को पोर्ट्रे कर देते हैं, और प्लेजरिज्म तब नहीं होगी जब हम उसको आइडिया को समझेंगे लेकिन अपने आइडिया को पोर्ट्रे करेंगे। अच्छा देखें, पैराफ्रेजिंग हमने कहा कि प्लेजरिज्म है, कब प्लेजरिज्म है, ठीक है, जब हमारे पास क्या है कि you actually read the sentence, ठीक है, you exactly copy that sentence, ठीक है, और फिर क्या है कि यू जस्ट यूज द वर्ड ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएं, एक दो उसके सिनोनिम देखें, उसको चेंज कर दें, और बाकी स्ट्रक्चर जो है उसका सेंटेंस का वही है, वर्डिंग वही है, उसमें कोई खास चेंज नहीं है। दैट इज पैराफ्रेजिंग, दैट इज प्लेजरिज्म, ठीक है। और ये स्वीयर प्लेजरिज्म होगा जब आप उसको रेफरेंस भी नहीं कर रहे होंगे, उसको साइड भी नहीं कर रहे होंगे सोर्स को कि कहाँ से आपने ये पढ़ा है, कहाँ से आपने ये देखा है, ठीक है। लेकिन इसी को हम कह रहे हैं कि इट्स अ टेक्निक टू अवॉइड द प्लेजरिज्म। कैसे? कि जब आप कोई सोर्स पढ़ रहे हैं, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, कहीं से आप देख रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, एंड यू मेक योर नोट्स। आप अपने नोट्स बनाते हैं, अपनी वर्डिंग में लिखते हैं सिर्फ की पॉइंट्स, और बाद में उस बुक को बंद करते हैं, उस आर्टिकल को बंद करते हैं, उस वेबसाइट को बंद करते हैं, फिर क्या करते हैं, यू राइट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, एंड अगेन यू एक्चुअली साइट द रेफरेंस, ठीक है, कि भाई ये मैंने यहां से ये जो मेरा आइडिया है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि हर चीज जो है उसके लिए रेफरेंस देना जरूरी है? मतलब कोई सोर्स साइट करना, इसके कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जी बताएं। नहीं, मैं ये कहता हूं, हाँ मैं ये कहता हूं कि नाउअडेज स्मार्टफोन यूजेज इज क्वाइट कॉमन, ठीक है, तो क्या इसके लिए रेफरेंस चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? वेल नोन फैक्ट है, यह क्वाइट जेनेरिक स्टेटमेंट है, ठीक है,
इस तरह की स्टेटमेंट है कि जिसको शायद डिनाई करना जो है काफी मुश्किल काम है, ठीक है ना। लेकिन अगर लेट्स से कि अच्छा मैं ये कहता हूं कि जी सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इसके लिए रेफरेंस चाहिए? क्यों? यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, तो ऐसी चीजों के लिए कोई रेफरेंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि 90% ऑफ पाकिस्तानी यूथ यूजेस स्मार्टफोन, स्पेसिफिक हो गया ना, बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, कुछ नंबर है, कोई फिगर है, तो फिर क्या होगा? आई नीड द रेफरेंस, आई नीड द सम सोर्स कि भाई ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की साइट से लिया है, ये मैंने किसी टेक्निकल मैगजीन में पढ़ा है, किसी अखबार में पढ़ा है, कहाँ पे ये मैंने देखा है, ठीक है। तो लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि पैराफ्रेजिंग जो है वो टेक्निक है कि हम इससे अवॉइड कर सकते हैं प्लेजरिज्म को, ठीक है। एंड हाउ टू डू इट कि डायरेक्टली उधर से कॉपी नहीं करेंगे सोर्स से टेक्स्ट को, पढ़ेंगे, अपने की पॉइंट्स, अपने की वर्ड्स लिखेंगे और फिर उसको जो है उसको रेफर करेंगे, साइट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक दूसरी पॉसिबिलिटी, एक दूसरा सिनेरियो आपको बताता हूँ। एक डेफिनेशन है, जैसे वो आपने फिजिक्स वगैरह में न्यूटन्स के वो पढ़ते हैं लास्ट, ठीक है, वो बड़े स्पेसिफिक डेफिनेशन है, उसको एज इट इज आपने लिखा है, तो फिर क्या करेंगे? उसको भी चेंज करेंगे, अपने अपने स्टाइल में लिखेंगे आप। क्या करेंगे? एज इट इज आपने उस डेफिनेशन को लिखना है ना। हाउ टू डू इट? कोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। और कोटेशन यूज करने के ऊपर भी क्या करेंगे? सिर्फ कोटेशन नहीं यूज करेंगे, साथ उसको उसके सोर्स को साइड भी करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज लिखी है यहाँ पे स्लाइड में, जो एक इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, दैट इज रेफरेंस लिस्ट वर्सेस बिब्लियोग्राफी। व्हाट इज द डिफरेंस? बताएं आप, लास्ट में बताएं भाई, आप बताएं। नहीं ग्लासेस, ये आपके भी ग्लासेस है, आपसे नेक्स्ट। क्या नाम है आपका? है मुश्तबा जी, मुश्तबा बताएं। बिब्लियोग्राफी आपका नाम क्या है? दोबारा बताएं, नाम मुझे आपके याद हो जाएंगे, आप दोबारा अपना नाम बताएं जी। सेकंड रो में साकिब के पीछे अनवार जी। रेफरेंस लिस्ट में हम लोग जितने भी साइट से, जितने सोर्सेज से हम लोगों ने अपना कंटेंट लिया उनके रेफरेंसेस देंगे, और बिब्लियोग्राफी में वो सारी बुक्स होंगी, उनके नेम्स होंगे और ऑथर्स के नेम्स होंगे या वेबसाइट्स के लिंक्स होंगे जहाँ से हम लोग। ठीक है, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो रेफरेंस लिस्ट होती है आमतौर पे वो क्या होती है कि टेक्निकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, हम उन्हें आम जो है ना इन जर्नल जो है हम कहते हैं कि रिसर्च पेपर्स होते हैं, ठीक है, टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि टेक्निकल मैगजीन्स के अंदर पब्लिश होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जहाँ पे किसी का आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो शेयर कर रहे होते हैं, वहीं पे उसको साइट कर रहे होते हैं सोर्स को, ठीक है, और वो आखिर में एक लिस्ट दी होती है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस लिस्ट, और वो 1 2 3 करके आपने देखा होगा, और कहीं पे टेक्स्ट के अंदर लिखा होता है ना, जैसे सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, या उसके अंदर जो है ना वो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है 1 2 3, ठीक है, या कुछ इस तरह से होता है कि ऑथर नेम और साथ ईयर लिखा होता है, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली रेफरेंसेस नीचे जो है ना रेफरेंस लिस्ट के अंदर दिए होते हैं, ठीक है जी। साकिब नहीं, रेफरेंस लिस्ट जो है ना वो पेज पे, हर पेज पे नहीं होती, वो जो हर पेज पे होता है ना दैट इज कॉल्ड फुट नोट, ठीक है, और वो अक्सर जो है ना डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में या बुक्स के अंदर होता है, ठीक है, लेकिन टेक्निकल आर्टिकल्स के अंदर आमतौर पे फुट नोट्स नहीं होते हैं, ठीक है। वो रेफरेंस लिस्ट होती है जो कि डॉक्यूमेंट के एंड पे एक सेक्शन होता है, उसी के अंदर सारे रेफरेंसेस दिए होते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी ये होता है कि आप कोई बुक लिख रहे हैं, आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, आपका अपना एक नॉलेज है, कैलिबर है, ठीक है, और आपने डिफरेंट तरह के जो है ना सोर्सेस या रिसोर्सेज को देखा है, उससे जो है आपने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप की है, लेकिन आप डायरेक्टली उनसे कोई एज सच मटेरियल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं कि अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना थोड़ी देर पहले कि लूप्स के बारे में आपने एक असाइनमेंट करनी है, एक कोई काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट लिखना है, तो आपने 3-4 डिफरेंट बुक्स के पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, फिर आपने अपने तौर पे उसको एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके मतलब
behind the scene आपकी different तरह की resources, different आपका experience, वो सारी चीजें count कर रही हैं, लेकिन वहां से आप directly कोई material नहीं ले रहे और अपने तौर पे लिख रहे हैं. तो फिर इस केस में क्या होता है कि आप just एक list दे देते हैं, that is called bibliography, कि जब आपने इस डॉक्यूमेंट को लिखा तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना इनको देखा या इनकी बेसिस के ऊपर आपकी ये थॉट्स डेवलप हुई है. ठीक है, तो अक्सर बुक्स के अंदर बिब्लियोग्राफी होता है और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो क्या होता है, रेफरेंस लिस्ट होता है. ठीक है, प्लेजरिज्म डिटेक्शन इज क्वाइट इजी, आपको मैंने कल बताया था. टर्निटिन इज क्वाइट गुड टूल. ठीक है, दैट इज अवेलेबल, हमारे लिए भी अवेलेबल है और हम उसी के थ्रू असाइनमेंट सबमिशन होगी. और पेनल्टी जो है इसकी बहुत सारी जगहों पे बहुत सवेयर किस्म की पेनल्टीज होती हैं. मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूं कि जब हम स्वीडन में थे, ठीक है, हमारे एक दोस्त ने क्या किया, कोटेशंस दी, कोटेशन के बाद रेफरेंस नहीं दिया. ठीक है, तो इसके ऊपर जो पेनल्टी उसको पड़ी, कोटेशंस दी थी कि भाई ये मेरा टैक्स नहीं है, लेकिन उसके साथ उसको रेफर नहीं किया सोर्स को. ठीक है, तो इसको रेफर ना करने पे उसको 1 महीने के लिए प्रीमिसेस में मतलब जो है ना कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया कि वो नहीं आ सकता यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में, और उस सब्जेक्ट के अंदर भी उसको फेल किया गया. ठीक है, तो ये मतलब इस तरह की पेनल्टीज बड़ी कॉमन है यूरोप के अंदर. ठीक है, हमारे केस में पेनल्टी क्या होगी, अगर आपने कॉपी किया 0. ठीक है ना. एज आई टोल्ड यू, we are going to actually follow the textbook written by Queen, but our first chapter will be from this book, that is Ethics Information Technology, and the writer of this book is author of this book is Reynolds. Okay, so first chapter is about the basics of ethics. So what are the objectives of this chapter? Number 1, we will discuss what is, very basic definitions of ethics. What is ethics? Why it is important? Okay, and then we actually discuss, because our topic is actually not only to discuss the ethics, but ethics in profession. Okay, and specifically in IT profession. So we here in this chapter we will discuss in journal that what is the importance of ethics in the profession, in the business, in any organization. Okay, and then we will discuss that what are actually the strategies or the policies, or what are actually the way forward for the organization if they want to practice the ethics. And obviously good ethics. Ethics means good practices. Okay, and then what are the reasons why the organizations are interested in ethics, in good practices, in good business processes. Okay, and then we will actually also discuss the decision making process. Okay, if we have to take the decision, what are the steps, how we can actually come up with the decision. Okay, and lastly we will discuss that what are the reasons that people actually behave in an unethical way. They want to promote their business, they want to grow, but with some other like unfair means. Okay, so we will actually discuss it. Okay, ethics. In ethics we have the different kind of terms that we very interchangeably use. Number 1, moral code. Moral code is actually the set of the set of rules, are like what is good and what is bad. Okay, so that is your moral code. We often actually refer like what are the moral codes of this society or this organization, how this organization is actually we often actually ask, when if we are interested in some organization and we say, okay, how is the environment of this organization? So what does it mean? Actually, we want to know that what kind of ethics in that organization. Okay, and what is morality? Morality is based on that set of codes. We have some codes, some guidelines, some good and bads, and then that good and bad actually decides or actually come up with the common behavior of the society. That is called morality. Okay, and in other words we may say that it is actually the social conventions. Morality is the social convention. Okay,
Now, it is quite interesting that morality is not kind of something that is universal. Morality may vary. Like different societies have the different level of moralities. Even different individuals have the different kind of moral codes and different moral values. Do you agree? So, number one, age is the factor that actually affect the morality. How? If I am teenager, if I am a student, and what I said that maybe cheating is like the normal practice for me, although it's not a good practice, but for your teacher, it is quite bad. Students feel in other way, whereas the teacher feels on the totally other side. Okay, so number two is the cultural group. Different. What is the culture? Culture is actually, again, like what I said, the morality is the common, the convention of the society. In the same way, culture is a common belief, common understanding of the morality, and one society practice that culture. Okay, so different societies have the different cultures, have the different meaning of the morality, and they have the different moral values. Okay, like just take this example. If we have like black color have different meaning in the different cultures. Maybe in some culture it is like a sign of something sad, and in another society maybe it is kind of the sign of happiness. Quite possible. Okay, ethnic background. As I said, that we in the society have the common values, common conventions. In the similar way, when we have this ethnic classification, definitely some values and some the moral codes are also associated with the ethnic background. Okay, so it is also very important, and also kind of admitted factor that ethnic background also have some kind of effect on the morality. Okay, religion, obviously every religion has some sort of good teaching, but again different religions have the differences. They have the different kind of guidelines. And Alhamdulillah, our belief is that Islam is the best guide. Islam is the best code of life. Okay, so in coming lectures we will discuss it. Then life experiences. Obviously, if one individual is grows or is grooming in an environment that is quite sophisticated and quite that kind of technological surrounding, and one is like living in the suburbs and they have no facilities. Obviously these two individuals will have like kind of different approaches towards the different scenarios of the life, or the different real life scenarios. Okay, so life experiences are definitely make a difference when you think about the morality. Like one guy is quite good and he feels like everyone is good because his experiences are like very positive kind of experiences. Similarly, one guy maybe have a kind of angry young man, and every time he is like is in the field, and is kind of he has a feeling of anger because his experiences may be like quite bad about the society or with the people who interacted with him. Okay, so different life experiences definitely affect your approach towards the society and the moral codes. And then we have education, and again it is actually the well-known truth that education makes a difference. Okay, educated and uneducated both have the quite different approaches. They have the different in general education has positive effect, but it doesn't mean that if you are educated you always have some good ethics. Okay, we experience in our daily life, we have very good medical professionals, we have quite good
IT professionals, but maybe they are not good in their, dealing with the people, dealing with the, other colleagues. So it means that although they have very good education, but they don't have the kind of good behavior or the good ethics or the good morality towards their society. And then gender. Gender also have some effect. It's kind of the natural differences between male and female, and obviously it affect the morality. Okay, we may discuss this slide if you have any question, if you have anything to discuss. Agreed? کوئی کنفیوژن نہیں, کوئی کوشچن نہیں, کوئی جینڈر کو آپ ایکسپلین کر دیں بھائی. اچھا آپ بتائیں. ہاں جی, کیا نام ہے آپ کا؟ حسن. حسن, آپ ایگری کرتے ہیں کہ morality ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ کیسے؟ ہمارا دین ڈفرینس کہتا ہے کہ مردوں کی سطح کا الگ ہے اور عورتوں کی الگ ہے. صحیح. اور ٹھیک ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے ان دا کانٹیکسٹ آف ڈریس کوڈ کہ بھائی ڈریس کوڈ جو ہے وہ, لیکن اٹ ڈزنٹ مین, دیکھیں اٹ ڈزنٹ مین کہ جی جو ہے نا جو لڑکے ہیں, ٹھیک ہے, جو میل ہیں وہ ایسے جیسے مرضی ڈریسنگ کریں. نہیں, ان کے لیے بھی ڈریس کوڈ ہے. یہ جو ہے ڈریس کوڈ کی جو ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے, وہ کائنڈ آف نامینل ہے. مطلب دونوں کے لیے بڑی اچھی گائیڈ لائنس دین نے دی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ ریلیجن کے پھر اگین پوائنٹ آف ویو سے آ رہا ہے کہ جیسے اسلام میں ہے کہ ایک جو ہے مرد کی گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ہے. یہ ہے نا کہ بھئی ایک مرد لے لیں اور 2 عورتیں لے لیں, اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی وہ ایک بھول جائے گی تو دوسرے کو وہ یاد کرا دے گی دوسری. ایسے ہے نا. تو یہ مطلب ایک میں نے آپ کو کہا نا کچھ چیزیں نیچرل انکلائنیشن ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے اکثر اس طرح کے جوکس بھی ہوتے ہیں کہ فادر ہے اگر, ٹھیک ہے, تو وہ سویا ہوا ہے, بچہ رو رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر مدر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بچے کو ایسے روتا ہوا نہیں چھوڑے گی, ہے نا ایسے. اور بھی اس طرح سے, مطلب یہ اگین کچھ بلڈ ان چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ڈفرینٹ اس طرح کی آپ کی اپروچز ہوتی ہیں, ہاؤ ٹو لیو دا لائف. ٹھیک. اچھا, اور کوئی کوشچن ڈسکشن نہیں؟ اچھا, موو کرتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پہ. دا ڈیفینیشن آف ایتھکس. ایتھکس کیا ہے؟ اٹس اے سیٹ آف بلیفس اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ بہیویئر. وی ہیو سم good things and also the things that we don't like. So good behavior, acceptable behavior and unacceptable behavior. So that is actually the belief. What is the virtue? Virtue is actually any good habit that we have, that we practice, that we follow, that is virtue. And the opposite side is actually, the other side is the vice. Vice is actually the bad habit or the unacceptable behavior of any individual in the society. That is vice. Okay, so this virtue and vice actually makes up the value system that we call morality, or we call culture. Okay, the culture of the society. So in every society, I mean, we have something that is considered as the virtue, and there are some things that are considered as the vice. Okay. And it is again, what I said, the different cultures have the different kind of morality. Okay, in Europe, they are quite punctual. If anyone is like just a few minutes late, that is like quite embarrassed, and it's not acceptable in that society. In Pakistan, we are in walima ceremony. We have the dinner, and we are like, it's quite normal that we are 3 hours late. So that is actually the morality. That is actually the acceptable behavior, acceptable kind of habits. Okay. Okay. What is integrity? Integrity is actually very important factor or the characteristics of any individual, and similarly is the characteristic of any organization or any is any society. So integrity means that
you actually behave in the same way in every situation. Doesn't matter. It's like that situation is in your favor, or it's against you. Like if someone is the man of integrity, okay, it doesn't matter. He is, taking decision against someone, and that someone is maybe his friend, maybe, and he is favoring someone who is actually not like quite good colleague of him, but still, if he is he has the integrity, he will take the decision on the merit. Okay, what does the merit mean? We have no personal affiliation, we have no personal biasness, and we just take things on the merit. And that is like, in other words, you can say that integrity is kind of a consistent behavior in every kind of situation. Okay, so if someone is not the kind of like person with integrity, then it is, we will discuss in coming lectures the theory of relativism. What does it mean? That everything is relative. Okay, so I say in this situation, okay, if I say something wrong, it's okay because it is actually giving me some kind of advantage. In other situation, I say, oh, always speak truth, always be fair, always be honest. Okay, so this means nothing is kind of permanent, nothing is kind of constant, nothing is kind of universal, and everything is relative. So whenever situation is like I can take advantage, I actually change my rules. I can change my actually whatever the practices I have. So integrity, if I don't have the integrity, then it is like I am kind of a dangling man. Okay, and if I am a dangling man, then I have no worth. Okay, so it is very important. And then again, why it is important? As I said, we have different kind of situations that are not simple. Okay, just take this example. You are the CEO of the company, and you have the tender from 3 different companies to purchase some equipment, and one of those 3 guys is your friend. So other 2 are offering very good equipment with some on the cheaper rate, but whereas your friend has some equipment that is not maybe of that quality, and that the price of that equipment is a bit high, but because he is your friend, you are going to award the tender to that guy. So this is not actually the fair way to deal with the business, with the organization, with the other institutions. So this is actually the kind of situation. This is one example, that there are multiple situations where you are actually you have to take the right decisions, but that right decision is not easy to take. Okay, if you are man with integrity, then you will have no fear, then you will actually have no confusion. Okay. Okay, now the question is, what is the difference between moral ethics and laws? Actually, what I said, we have some set of rules, then those rules have actually the what we call it, the shared belief about the good and bad, and we practice it. Okay, and the third thing is actually the law. When we say that this is the morality means that okay, it is expected behavior. If someone practice it, it is good. If someone is actually denying it, then still people feel bad about that guy, but it is okay because it is not kind of something that is compulsion. But when we have law, that law is actually kind of enforced guidelines. Okay, that is kind of enforced mechanism. So once we have something in the law, then it is actually the obligation for all the society members to actually practice. Okay, like this is the convention, we have the traffic light. Okay, if it is red, there is no traffic on the other side, but we have to stop. We have to wait for the green signal.
And if we break the signal, then obviously, I mean, my argument may be that, okay, there was no car, there was no traffic, and it was like okay for me. But because it is law, and you are breaking the law, then you will be punished. Okay, so this is the law. Okay, I mean this is the difference between the law and the morality, or the ethics and the law. Okay, when we have the law, that is like a compulsion, and we have to follow it. Okay, now it's the time for discussion. Few minutes we have for the discussion about these slides. If you have any question about the importance of integrity and the difference between morals and the law. जी, कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? नहीं? ठीक, जी बताएं. So the first statement है वो explain करते हैं कि ethical behavior का punishment कैसे है. देखिए इस तरह से है ना कि अगर इंटेग्रिटी नहीं है, ठीक है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कि आप सारे अभी मैंने आपको बताया ना कि कंसिस्टेंट बिहेवियर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है ना हमारे दीन के अंदर भी हमें सिखाया गया है कि इबादत जो है चाहे थोड़ी करें लेकिन कंसिस्टेंटली करें, ठीक है. और कंसिस्टेंट अभी देखिए मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि भाई टीचर है क्लास में या नहीं है, ये इट डजंट मैटर, ठीक है ना. असल चीज़ ये है कि अगर हम अगर मुस्लिम हैं, अगर हमारा बिलीफ है कि भाई अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए ना. हम मतलब ये एक इंटेग्रिटी की बात है, ठीक है ना, कि हमारा अपना एक करैक्टर है, और अगर वाकई हमारा बिलीफ सही है कि अल्लाह ताला हर वक्त हमें देख रहा है और वो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है जो कुछ हम कर रहे हैं, तो फिर हम चीटिंग नहीं करेंगे, टीचर की जरूरत नहीं होगी. तो लेकिन टीचर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है तो पीछे सारा जो है ना लोग, सारे नहीं तो अच्छा चले कुछ जो है वो चीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. तो इसलिए इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. अदरवाइज कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं है. एक बंदा है बहुत अच्छा है, एक दिन आपका दोस्त बहुत अच्छे मूड में आपके साथ मिलता है, आपको बड़ा अच्छा खाना पीना ऑफर करता है, दूसरे दिन जो है वो बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराता है. ऐसे बंदे को आप लाइक करते हैं? नहीं करते, ठीक है. आगे भी कंसिस्टेंसी पे भी बात करेंगे, आगे अभी नेक्स्ट जो है ना कि बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर हम इसकी भी बात करेंगे. और कोई क्वेश्चन नहीं इसके बारे में? कोई क्वेश्चन? ओके जी. जो लॉज रेगुलेट किए जाते हैं वो भी तो सर बेस कर रहे होते हैं एथिक्स और यस. लॉज कैसे रिलेट करता है एथिक्स से इन प्रोफेशन? देखिए अभी हम ये कह रहे हैं कि लॉ जो है दैट इज काइंड ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है, एंड अगेन बेस्ड ऑन द एथिक्स. एथिक्स के जरूरी नहीं है कि हर जगह के एथिक्स एक जैसे होंगे. अभी हमने कहा ना कि डिफरेंट कल्चर्स हैव द डिफरेंट मोरल वैल्यूज, ठीक. तो लेकिन जब आप जब लॉ करते हैं, लॉ जब मतलब फ्रेम करते हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करते हैं कि जो भी आपके एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं विद इन सोसाइटी, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, उनको उसके अंदर लेके आना चाहिए. और कोई भी लॉ आप अगर देख लें, समटाइम्स आपको लॉ बड़े जो है ना काइंड ऑफ सिली लगते हैं, स्टूपिड लगते हैं, खैर ये क्या लॉ है, ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि हर लॉ जो है दैट इज एक्चुअली हैव काइंड ऑफ रैशनल, ऑल्दो के उसके ऊपर सोचा जाता है, डिस्कस किया जाता है, लेकिन मतलब हर लॉ को आप एथिक्स के साथ रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना. और समटाइम्स ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लॉज जो हैं वो आपके इंडिविजुअल जो आपके बिलीव्स हैं उसके साथ भी उनका क्लैश हो सकता है, ठीक है. जैसे आजकल बड़ा कॉमन है ना वेस्ट के अंदर, कुछ मुल्कों के अंदर वो कहते हैं हिजाब, फीमेल जो है वो हिजाब नहीं ले सकती हैं, दैट इज लॉ, ठीक है, लेकिन वो उनके इंडिविजुअल बिलीव्स के साथ कंफ्लिक्टिंग है ना, ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ये जो है सिंक होंगे लॉ और एथिक्स, ठीक है. आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे. हमारे पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हैं कुछ ऐसी हैं जो कि मतलब कंफ्लिक्टिंग है. जैसे हमारा जो देखें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, वो ये कहता है कि कोई भी लॉ मेकिंग जो है वो अगेंस्ट शरिया नहीं होगी, अगेंस्ट इस्लाम नहीं होगी, ठीक है. लेकिन यहीं पे देखें आप कि पिछले मतलब 70 सालों से, ठीक है, क्या हो रहा है, सूद चल रहा है, ठीक है ना. मतलब हमारी इकॉनमी इंटरेस्ट बेस्ड इकॉनमी है ना,
اور اس پہ پچھلے 20-30 سالوں سے شریعہ کونسل اور وہ سپریم کورٹ اور وہ سارے لگے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے, اور اگین گورنمنٹ سے اس کے جی ہمیں اس پہ ٹائم چاہیے الٹرنیٹ لے کے آنے کے لیے. تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو سود ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم سارے کسی نہ کسی طرح سے اس میں انوالو ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, کلیئر, چلیں. Okay, now the topic is ethics in the business world. Why we need ethics in our business, in the organizations. There are some recent, kind of scandals, quite big scandals, like HP company scandals, like some few other companies scandals, big companies. Okay, they actually then raises the question that why it is happening and what is happening. Okay, and that is, I mean, the one important factor. Like I mean, maybe you are aware of the Nokia mobile phones. They have quite good business. If we go back to 10 years time, Nokia have quite good business. And what we feel actually that they couldn't compete with the Android and with Samsung and with Apple. Okay, but if you read this chapter in the book, you will actually find the whole story of the Nokia, that it was not only the technical competition that they lost. No, there were some other factors as well. What were those factors? Like they have their origin, their origin was from Finland. They have their plant and production in the Finland. Then they actually decided to move that production to the maybe Poland or Germany. And they thought that they will actually, make efficient production, cheaper production. And after a few years, they decided it is no more cheaper. So we should move to some other country. And they then actually switched to China. And the people in Germany or Poland, they actually got annoyed from the Nokia. And they decided that they will not use, Nokia phones anymore. So it was like kind of setback for them, for the Nokia company. And then the similar kind of, thing happened in Iran. And the Nokia company actually, provided the services to the Iranian government to actually to do kind of spying for the people of Iran. And when they actually came to know that the Nokia equipment is used for this purpose, they decided that, okay, we will not use Nokia phone. Okay, so the one side is actually the technical side, but the other side is a kind of ethical side. They have some decisions that were like not ethical decisions, that were not actually acceptable to the people in the different regions. So then actually they started losing their business. Okay. Anyways, another reason that why we need ethics in the business, globalization, global economy, global market. Now here we have a kind of free trade. Now we say that this world is kind of global village. So market is open. The whole world is open to everyone. And we don't need actually some sort of tangible product. We just have the Facebook. Facebook is like kind of a website or the web service or the web application, and users are like in billions. Okay, so if Facebook is doing the business, obviously, Facebook has to have some ethical guideline, some good ethics, some good practices to actually satisfy their customers, their clients, their users that are around the globe. So when you have this free trade, then there is quite, kind of competition. And if you want to compete, then maybe sometimes, like if we want to get the good grades in the subject,
we say, okay, cheating is okay. Similarly, if we are competing with the big companies, so sometimes we feel that, okay, doing some unfair mean is okay, like, okay, we are like giving some kind of commission, some kickbacks to the some individual or some companies to get the business. So this is another reason. And these actually, the factors like the different scandals that happened in the recent time, and this globalization, and it actually, kind of warned the employees and the government agencies, law enforcement agencies, and also the shareholders, the stakeholders of the companies, that there must be, like some company is showing you very good profit on the paper, and behind the scene that is like continuously losing in the market. So for how long it can actually survive? So it is kind of, the fraud. So you actually then have to have some, the rules, the mechanism, some kind of law enforcement to actually make sure that this organization is not actually cheating with the customers or with the shareholders, with the clients. Okay. Okay, I have already explained it that there are some recent scandals in IT industry specifically. Okay, you can actually read the detail of these scandals in chapter number 1 of this book. Okay, and it is also very important that the top management, it is not necessary that the top management is actually not fair with the company, or they are not actually practicing the good ethics. But the lower staff, they are also human. They also have like kind of bad inclinations. So it is like if I have, the privilege to actually use the company resources at large, maybe some small, staff member, some lower staff member have privilege to use some sort of, the limited access of the resources. So if we are using those resources not for the official purpose, not like for the ethical way, then it is also kind of the bad practice that we must discourage. So this is another, the reason. There is an, kind of case study or example that there was a staff member in small organization. When he was like about to retire from that organization, he just took like few mobile phones, smartphones of the company to his home. So this is a kind of example. Okay, so these are the reasons that why we need ethics in the business. Now, what are the advantages? Why we actually want to have or practice those good business practices? Number one, we want to actually gain the goodwill of the company. Do you know the goodwill? Goodwill mean that you have some kind of positive impression in the society, in the business world, in the market, that you have some good repute. Number two, you want to create an organization that operates consistently. As I already told you, that consistency is very important. If I am consistent when I am producing something, I am doing something in a consistent way, then people actually trust me that this is a guy who actually does the way, who does the same thing in the same way, not like every time in a different way. Okay, so the organization, if they have the good quality product, every time they provide the quality product, definitely they actually extend their customer base. Okay, they extend their business. To foster good business practices, and good business practices is like is have kind of continuous advantage for your business. If you have good practices, you actually make your production quite optimized. You make your production quite efficient. If you cut down your production price, you offer the cheaper, product to your customer with
with good quality product. So it is another, I mean, the reason that you have some good kind of processes, well-defined processes to actually produce the whatever you are producing. Number 4, to protect organization employees from legal action. As I said, that when you have some big scandals on the media, then you actually, that organizations, not only the organization, but also the government agencies, law enforcement agencies, they actually come up with the rules, with the guidelines, with the law that it should not happen again. So those actually laws and the enforcement are like also the kind of the reason. Okay, next time when you are doing some business, you are doing something, you have some set of standards that you have to follow this standard. Okay, and number 5, to avoid unfavorable publicity. Obviously, if you don't have the goodwill, you have the unfavorable publicity. Okay, and if you have unfavorable publicity, then you cannot do the business. You cannot actually generate the money. You cannot generate the profits if people don't trust you, if your customers actually don't trust you. As I told you, in case of Nokia mobile phones, people actually, started to think in other way, and then they started to lose the business. Okay? چلیں جی، اب ہم آ جاتے ہیں اس کے ڈسکشن پہ. ابھی ہم اس کو آگے فردر ڈسکس کریں گے. اگر اس میں بھی کچھ پوچھنا ہے آپ نے تو پوچھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں. ہے کوئی کوشچن ہے؟ بتائیں. اوکے، چلیں آگے چلتے ہیں. Number 1, gaining the goodwill of the community. Why it is important to have the goodwill? Because we want to grow in the market, we want to have good business. So how to actually get the goodwill, how to actually make favorable publicity within the society. There are different possibilities, there are different ways. Number 1, you actually, in your formal documents, you actually, I mean, it is quite a basic norm. Whenever you start your business, and you actually start with the kind of statement, with the declaration that you want to serve the society, you want to do something good for your society. That is the reason that you want to do the business. Obviously, you actually earn the money, you get the profit, but one key reason, at least in the documents that you describe, that you want to serve the community, and it is something very good. But it is not, enough. It is not actually sufficient when you say that, okay, I want to serve the society. You have to actually show some kind of evidence that, yes, you are really sincere towards your society. Then how you do actually? Like number 1 is quite, easy way to actually have some kind of donation for some, kind of welfare projects in the society. And many organizations actually, when they donate for the society, when they donate for welfare projects, actually they get the rebate, or they get the relaxation in the tax from the government. Actually, the government also encourage those companies that if they are thinking about the society, about the betterment of the society, then they get the relief from those, the tax deductions. Okay. Another possibility to actually create the goodwill. Goodwill is, it is very important actually to have your loyalty of the employees. You are quite good in the society by actually donating a lot of money in different projects, but if you are not good with your employees, if you are not actually giving them something extra beyond the legal requirements of the employee, so it means that you are not actually getting the loyal employees. Whenever they will get a good offer, some good package from the other company, they will actually switch. Okay, so it is very important
for the goodwill of the company, that you actually do something extra for your employees. You know, there is, I mean, it is a real story. I asked one software developer who was working in quite big company of real estate, and I asked him that, okay, what is your salary and what is your annual increment? And then he said, you know, for last 3 years I didn't get any annual increment. I said, it's quite strange, because your company, your organization is doing, you know, kind of welfare projects for the society, and on TV channels every day I see a lot of, you know, advertisement. Then he said, yes, that is for marketing purpose. But for employees there is nothing extra in the organization. Even the annual increment, that is kind of, you know, is kind of, you know, the legal kind of thing, that the basic requirement that you have to actually pay. He said, we are not getting that annual increment. So, I mean, it should be with the good intention for the society, and also with sincerity for your employees, okay? And then number third is like, you should choose the business that is not only profitable for you, but it is also, you know, the need of the society. I mean, you have the options to do different kind of, you know, the business projects, and you choose the project that is good for your society. That is the need. Like, okay, I am in energy sector, and I have multiple options to do the business, but I do like the business that is a cheaper solution for my society, because we have the energy crisis. So it will be good to actually come up with some cheaper solution for this problem, rather than, okay, to do something else that is actually not the real need of the society. Okay, so these are the way that actually you create the goodwill of your company, and obviously this goodwill actually generates the business. Okay, and then again, this is what I said, that is actually when you are actually you have some kind of positive image in the society, then it is easy for you to do the business. If you don't have good relations with your society, with your customers, wherever you are doing your business, then it is really hard to actually earn the goodwill. Then it is really difficult. Like one petroleum company is working in some rural area. They want to actually explore the possible resources, petroleum and other resources. If they are good, I mean good in terms of they are offering something valuable to that area, then there are chances that they will actually do their business in a good way. And if you compare it with the other scenario, that they have no interaction with the locals, the people, the community that is living there, then there are chances that they may have the problem. Like if we are good with our neighbors, it is I mean easy for us to actually live there in a good way. If we are not good with our neighbors, then it is like a kind of problematic situation. Number 2 is creating an organization that operates consistently. As I said, if you are consistent, even in religion, in our Islam, if you do little bit but you do consistently, then you will be rewarded high. Because consistency is like consistency is like people actually expect and get what they expected. It is not like one day one guy is quite good with others, and the other day they have they have some totally different face of that guy. So it is not good. If you are consistent in your business processes, then you are actually consistently actually producing the quality product. And if you are, I mean in Pakistan, we are quite used to, one day you get, you know, quite good quality milk, other day is you know, quite opposite way. You have the complaints. If you are actually, you want to make the, you know, in local business, okay, first time
the shopkeeper or the guy who is dealing with you is quite good and actually offer, the extended service for you. And once you trust him, then later on you feel that okay, it is not that guy, or it is not the kind of service that he offered me on the first day. Okay, ٹھیک ہے, کوئی question? سب ٹھیک ہے, چلیں, thank you.